Yeah. Wasim, he has left the meeting. Just a minute. Let me start charging. Hello, you will have to give me 5 more minutes, please. Hello. Okay, sir. Okay. Yes, sir.
Hello, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Sorry for the delay. Was a gadget का problem था. Brightness. Change the device. Can you see the screen? Yes, sir. Hello. Can you see the screen? Yes, sir. Hello, Sonia. Are you there? Yes, sir. Can you see the screen? Yes, sir. No, sir. Still not. But yes. Presentation. Yes, sir. Hello. Yes, sir. It is I am visible. audible. Yes, sir. But Wait, there is some problem. Hello, am I audible? yes, sir. Yeah. Okay. Sorry for the delay. So we were discussing this press. We have started with the press, and you know the various application of the press. So this I had explained what this figure is. These are the various type of the presses which are based on the frame design. This is OBI press. Can anybody tell me the full form of the OBI press? Last time I had told. Hello. Can anybody tell me the full form of OBI press? Sonia. OBI. What, sir? Full form of OBI press. You can see the screen, Open no? back inclinable. Yeah, open back inclinable or open back incline. Like the back side is open and it is inclined. So this is uh, from where you can incline the press. So what is the purpose of the inclination? So that the components will fall down, and it can be collected from the back side easily. So you, without stopping the press operation, you can collect the components. That is the use of open back or OBI press. Then this is your strip feeding device. And this is used for straightening. I am just revising this, recapping. So this is used for straightening the strip. This is your decoiler and coiler. So decoiler means what? From here the coil will be unwound and here it will be wound again. Now this is a scrap coil and this is a fresh coil.
This is the mechanism for moving your RAM up and down. This is the RAM which is moved up and down, and to this RAM your die is connected. This is again a gripping device so that your strip is held properly. Sometimes the question will be asked that what are the supporting equipments which are used in press shop other than press. So that time you have to answer this. So other than press, you will have recoiling unit which will recoil the coil. Then it will pass to the straightening device where the strip is passed through the two rollers and where it gets straightened. Then you have, after straightening, you have gripper to hold the strip rigidly. Then it passes to the press and then it is coiled again so that it can be disposed of properly. You also need to write that in press shop it's very noisy, so you have to use the equipments that is what are the earmuffs, because in press shop if you have visited you cannot stand there, you cannot talk there also. And many times now the concept is that wherever the uh, operation there is the department like press shop department where all the engineers supervisors will sit will be in press shop itself. So they also need to discuss, they also conduct the meeting. So they should also talk to each other comfortably. So if it is in the press shop, then it is very difficult. So for that you have to use earmuffs, uh, which protects your ear as well as it acts as a sound barrier and doesn't allow presses noise to harm the human ears. So it is this also was discussed how the sharing happens. So you have the sharing happens from this point to this point, from this point to this point, like this it is. Hmm. And then top portion is under compression and the bottom portion is under tension. So the shearing or the cutting takes place like this. And I also told the you know how you can identify which is the top side and which is the bottom side just by taking a feel of the burr. If there is a burr, uh, the side where there is a burr, you can feel it by hand. So that is always the bottom side. And side from where there is no burr, that is always the top side. So in case of blanking, now see, this is a basic press operation that is blanking and punching. Just to recap. Now I am using this. So if many times the students get confused, so what is blanking and what is punching. So now here, this is what I am going to use, coin. So that coin is nothing but my blank. So this is what is blanking. And if I am throwing that, that means here I am scrapping this. That is discarded means scrap. So if I am scrapping this, I am using this. This is blanking. Okay. Now, if I am using this and if I am scrapping this coin, then that becomes a punching. Like I gave an example of puri. So puri is a blank, and from the piece of round big chapati, we cut the series of puris. uh, So that is your punching if you are using that. Then these are the different operations. Shaving is nothing but it is used for finishing. And if the tolerances are very close, then that is your shaving operation. Perforating means series of holes, then notching, and then slitting. And slitting is not cutting. There is a difference between cutting and slitting. So it just creates a slit. And this is your lancing operation.
So in lancing, uh, the slide, the component that is this edge is little bent uh, in lancing, but it is not totally broken. That is what is your lancing operation is. Okay. Then you have different operations like bending, drawing, bulging, and so on. Just to recap, and still some students are joining, doesn't matter. Go for basic dice. This also I touched upon. So basically, you have different type of dice like compound dice, combination die, progressive dice. So let us look at that. Many components you are not familiar at this time, but just try to remember. Like in compound dice, two operations are done simultaneously at a one station, at a single station. मतलब दो ऑपरेशन है वो एक ही जगह पे होएगा एक साथ. That is what is called as the एक साथ. That is what is important. Simultaneously. Simultaneously. मतलब हम लोग कपड़ा भी डाल रहे हैं और at the same time we are doing the brushing also simultaneously. So that is what is the compound dye. So a good example of compound dye is washer. वॉशर में क्या रहता है आउटसाइड डायमीटर एज वेल एज इनसाइड डायमीटर. सो दोनों भी अगर एक साथ हो रहे तो उसको हम लोग कंपाउंड डाई बोलते हैं. वो डाई को कंपाउंड डाई. स्टेशन मतलब जहाँ पे अपना ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टेशन. ठीक. तो एक प्रेस के ऊपर यूजुअली एक स्टेशन रहता है, लेकिन अगर वो प्रोग्रेसिव प्रेस है, प्रोग्रेसिव मतलब एक प्रेस के ऊपर दो स्टेशन या तीन स्टेशन मतलब जो एक जो रैम है उसको हम लोग तीन चार डाइज लगाते हैं. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव डाई या प्रोग्रेसिव प्रेस. मतलब वहाँ पे यू विल हैव मोर देन वन स्टेशन. यू विल हैव मोर देन वन स्टेशन और इट कैन बी अ सिंगल डाई. ओके. जिसमें कि मोर देन वन ऑपरेशन हो जाएगा प्रोग्रेसिवली वन आफ्टर अदर. इट इज नॉट साइमल्टेनियसली. हियर अभी क्या हो रहा है ब्लैंकिंग और पंचिंग दोनों भी. ये हो गया ब्लैंकिंग और ये हो गया पंचिंग. सो दैट इज व्हाट इज योर कंपाउंड डाई. और कॉम्बिनेशन डाई मतलब क्या वन आफ्टर अदर. जैसा कि अभी दिस इज अ ड्राइंग डाई. सो ड्राइंग करने के पहले ड्राइंग मतलब स्केच नहीं. ड्राइंग मतलब जैसा कि हम लोग कप बना रहे हैं. ठीक है. आई एम मेकिंग अ कप या आपका ग्लास है स्टील का. सो दैट इज डन बाय द ड्राइंग ऑपरेशन. तो उसके लिए पहला ब्लैंक बनाना पड़ता है और फिर वो ब्लैंक को होल्ड करके उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं. सो फर्स्ट इज ड्राइंग में फर्स्ट इज ब्लैंकिंग एंड देन इज योर ड्राइंग. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन टाइप. यहाँ पे रिमेंबर ऑपरेशंस आर नॉट हैपनिंग साइमल्टेनियसली. पहला क्या होता है ब्लैंक होएगा. ये देखो ये जो बाहर का जो डायमीटर है यहाँ से इस ये जो साइज है उससे आपका ब्लैंकिंग होएगा. एंड देन ये जो है यहाँ पे इनर पोर्शन देखना है उससे क्या होगा इट विल बी ड्रॉन. कहाँ तक होएगा यहाँ तक. अ स्मॉल कप विल बी ड्रॉन. सो फर्स्ट इज ब्लैंकिंग एंड देन इज ड्रॉइंग. यहाँ पे क्या हो रहा है ब्लैंकिंग एंड पंचिंग एक ही साथ हो रहा है टुगेदर. सो इट इज कॉल्ड द कंपाउंड है. यहाँ पे इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन है. दिस इज अ प्रोग्रेसिव डाई. प्रोग्रेसिव डाई मतलब क्या वन आफ्टर अदर. वन आफ्टर अदर. जैसे कि अभी यहाँ पे ये यहाँ से स्ट्रिप फीड हो रहे हैं. मान लो कि स्ट्रिप यहाँ से फीड हो रहे हैं. ठीक है. यहाँ से तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा. This is always a tricky question. Since the strip is coming, so you have to show the direction, strip का direction. तो ब्लैंकिंग पंच और एक पियर्सिंग पंच. यहाँ पे क्या हो रहा है पहला ब्लैंकिंग हो रहा है. इफ द स्ट्रिप इज स्पीड लाइक दिस फिर वो स्ट्रिप आगे मूव हो रहा है. ओके. देन पंचिंग हो रहा है. ओके. ठीक है. सो पंचिंग में क्या आएगा द स्ट्रिप विल बी यूज. ब्लैंकिंग में जो पीस कट हो रहा है दैट विल बी. अभी इन दिस केस द स्ट्रिप इज स्प्रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. यहाँ से ऐसा स्ट्रिप फीड हो रहा है. ओके. because this particular progressive die is made for the
washer. This is not a compound die. Remember, the compound die is more progressive die. Now the strip will be moved like this from यहाँ से ऐसा आएगा strip. Okay. तो यहाँ पे क्या होगा? Punching होगा first. Punching. Okay. ठीक है. So punching में ये जो नीचे जो slug गिरेगा, that is waste. ओके सो आपका जो स्ट्रिप है उसमें आपको एक ऐसा होल दिखेगा. ओके देन द स्ट्रिप विल बी मूव एंड देन यू हैव ब्लैंकिंग पॉइंट. तो ब्लैंकिंग में अभी ऐसा ये राउंड कट हो जाएगा. ओके सो नाउ द स्टफ विच इज फॉलिंग डाउन दैट इज नॉट डिस्कार्टेड, दैट इज नॉट स्क्रैप. हियर दिस इज द स्क्रैप. बराबर है. यहाँ पे ये आपको जो पीस मिल रहा है दैट इज यूज एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वॉटर. दिस इज नॉट अ कंपाउंड डाई, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डाई. ओके सो जब भी फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग ये स्ट्रिप फीड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तभी क्या होएगा? पहला पंचिंग रहेगा, यहाँ पे स्ट्रिप नहीं रहेगा. बराबर है. बाद में जब स्ट्रिप आगे जाएगा तभी क्या होएगा? इधर ब्लैंकिंग होएगा और इधर पंचिंग होएगा. रिमेम्बर. ओके सो ओनली फर्स्ट पीस में देयर विल बी अ सिंगल ऑपरेशन ऑफ पंचिंग ओनली इन द फर्स्ट स्ट्रोक. जब भी हम लोग प्रेस चालू करते हैं, सुबह 8 बजे चालू किया, फ्रेश शिफ्ट चालू होता है, तभी पहला स्ट्रोक मारा तो पहला स्ट्रोक में क्या होएगा? जब भी हम लोग स्ट्रिप को लोड करते हैं तो पहला स्ट्रोक में खाली यहाँ पे पंचिंग होएगा. बाद में स्ट्रिप आगे गया तो यहाँ पे क्या होएगा? पंचिंग होएगा और ब्लैंकिंग होएगा. फिर जैसे जैसे मतलब सेकंड स्ट्रोक ऑनवर्ड्स यू विल हैव ब्लैंकिंग भी और पंचिंग भी, बट स्टिल इट इज नॉट अ कंपाउंड. Okay, because as per definition of compound die, blanking and punching they are done simultaneously at one station. Okay, so these are here there are two stations. This is one station and this is second station. So even though second stroke onwards, blanking and punching is happening simultaneously, still it is not compound die because blanking and punching they are done at two separate stations. And like that you can have one more station, third station, fourth station in a single die itself. Okay. So progressive die का अभी ये क्या कंपाउंड डाई में आप दोनों एक साथ कर सकते हैं. लेकिन अगर सपोज if you want to make the die easy, then you can do punching at one station and blanking at another station. तो उससे क्या होता है? आपका डाई बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है. Compound is always थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहते हैं. Then at another station you can have slitting, then next station you can have lancing, then आगे perforating. So you have to design. You cannot have 10 station का die because इतना load लेना पड़ता है. बराबर press. Okay, so this is what is your progressive die is. Okay. These are the different components of the die. These are the different components of the die. Like this is the strip. Very first observation before die designing, or very first rule or principle that you have to decide the sequence of the operation. पहला obviously अगर washer बनाना है तो first has to be a punching and then you have to do blanking. You cannot have blanking first and then punching. आप blanking पहले करेंगे तो blank तो नीचे गिर जाएगा. फिर वो ब्लैंक के ऊपर आपको पंचिंग करना पड़ेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो पूरा ब्लैंक है वो जमा करके आपको दूसरा प्रेस के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे पंचिंग करना पड़ेगा. ओके सो you have to properly decide upon the sequence whenever you are designing the die or before designing the die. So this is the different components. Now here the workpiece is like this. So obviously you have a blank and punching, blanking and punching. ये ऐसा आपका रेक्टेंगुलर पीस रहेगा ब्लैंकिंग का और ये अंदर ये hollow है so punching रहेगा. Okay. Now it is this is what is your die. Blanking die is this is your punches. Okay. So generally the die is at the bottom and the punch is from the top. Okay, generally. But you can have ulta also. You can have die at the top and punch at the bottom. Or if you want to imagine, now you have to rotate this
और इमेजिन करो। ओके, सो ये आपका पंच है, ओके, ये आपका डाई है, तो यहाँ से धक्का मारेंगे आप। ओके, सो तो पंच क्या होगा, नीचे आएगा। ओके, एंड देन you have a piercing punch here on the top, then you have a knockout rods. So how this will work, this is the strip which is fed, and which is this type of die is obviously by now you must have identified that this is a compound die, and you can see how complicated it is. So why it is a compound die, because इसमें आपका ब्लैंकिंग और पंचिंग दोनों भी एक साथ हो रहा है, ब्लैंकिंग एंड पंचिंग दोनों भी एक साथ हो रहा है, that's why it is compound die. So this punching is happening because of the piercing, and blanking because of the piercing punch. And for any operation, remember you should have a punch and the die. So punching is happening because of the piercing punch, hmm, and then blanking is happening because of this blanking die and blanking punch. So this is the blanking die, और ये आपका blanking, और ये आपका blanking punch है, and then piercing punch. This is the piercing punch. So you have to also look for the piercing die. Okay. So generally the die will be always bigger than the punch, and die will be hollow, and punch will be a solid piece which will go inside the die. Hmm. So let us not jump directly to the compound die. You will get confused. So only what you have to remember is, in case of compound die, blanking and punching, for example, it is done at one station only. Hmm. Then you have to remember the function of the stripper. The stripper is, so function of the stripper is to hold uh, the strip, is to hold the strip, because जब भी हम लोग ब्लैंकिंग करते हैं या पियर्सिंग करते हैं, so तभी क्या होता है, when the piercing punch, after doing the piercing, when it goes up, तो तभी वो क्या होता है, वो स्ट्रिप को उठाते हैं. ओके, सो it takes the strip with it, so that time there are chances that accident may happen. Okay, so strip should remain, strip should be hold. So that's why stripper is nothing but it's a kind of a plate जो कि strip को दबा के रखते हैं. See, this is stripper is nothing but a kind of a plate which keeps your strip pressed under the spring force. ये यहाँ पे spring है, this is the convention for the spring. तो spring की वजह से ये जो stripper plate है, ये जो strip है उसको दबा के रखते हैं, so that ये आपका strip है वो उठता नहीं है, जब भी आपका punch है वो strip में से बाहर आता है. Die shoe is nothing but the die blocks, and this is another example of the progressive die. Okay, so progressive die is again nothing but here the series of operations are done at different stations. The die is one only. See, this is one die. यहाँ पे एक die है, ये आपका स्टेशन वन है और ये आपका स्टेशन टू है. ओके, तो स्टेशन वन में आपका यहाँ पे पंचिंग हो गया और स्टेशन टू में आपका ब्लैंकिंग हो गया, सो दैट यू गेट अ वॉशर हियर. Okay, let me show you some videos so that before showing the videos I thought that I will introduce the press. This is what is your compound die is.
So here now, I hope you understood. So this is what is your piercing punch is, and this is your piercing die. Okay, and this is your blanking punch, and this is your blanking die. Okay, so this blanking punch and this blanking die will determine the size of the blank, and this piercing punch and this piercing die will determine the size of the hole. And these are all spring loaded pins or the supports to keep your strip pressed. In decoilers and coilers, they help for feeding the strip. So this is a compound die, this is a piercing punch, this is a ये जो है वो piercing die है, this is your blanking punch and this is your blanking die. Okay. These are normally very complex compound dies because we have to, you know, uh, place the blanking punch, you have to place the piercing punch, then you have to place the blanking die, and you have to also have the piercing die also properly. Then only because for a hole you need to have piercing punch and piercing die. For the blank you need to have blanking punch and blanking die. So it has to be hold properly. So the structure wise it becomes little complicated. This is for the bending operation. This is the ram. This is what is ejector is. These are the different type of bendings. Bending is not necessarily only V bending. It can be channel bending, and it can be complex bendings like this. This is dovetail. Bending can be done in the progressive die itself, or you can do it separately on another press. Normally, it is done separately on another press, bending. Otherwise, if you try to do bending in the same die, then it becomes very large and complex also. That was the sort of difficult component from ejection point of view. This is the progressive die for a washer. See now here the punching is now here. You will note that the strip feeding is in this direction. Okay, that is from left to right. So obviously first the punching is happening. Now when the strip goes ahead, the blanking is happening. So this is your so your see now your die design becomes so simple. Now for punching, this is a
punching and piercing is the same. So this is what is your punching punch or piercing punch is. This is your piercing die. Okay. Then obviously your punch size has to be less than the die size. Then this is your blanking punch and this is your blanking die. Okay, so far I have not talked about the clearance, where the clearance is given, whether the clearance is given on the punch or whether the clearance is given on the die. Now what happens when you are using blanking, when you're doing blanking, the strip, the inside hole and the outside diameter, they should be concentric to each other. So when you are doing blanking operation, you have to take a reference of hole. Okay, so this is a conical shape which locates the hole, which locates the hole in the strip. Okay, and then the blanking happens. Okay, so that the outside diameter will be concentric with the inside diameter. And why this is this shape or why this is taper? So that it enters progressively. It enters easily. This will enter easily in the strip. So that's why this is a slightly tapered, taper shape. Okay. So I did. So the compound diagram. These are the limitations. Okay. Making of the piercing die, fixing of the piercing die, making of the blanking die, fixing of the blanking die. But the advantage of compound die, since blanking and piercing, that is, since the operations are done simultaneously at one station, the accuracy is more. That is the one biggest advantage of compound die. That is, they can come, they will be concentrated to each other, 0, 0. You can see. Whereas, even though here we are locating, you cannot get the accuracy that high which you get it in compound die. But the die design becomes very simple in progressive die. So this is punching is done first and then blanking. So this is what is your location. So see, now this is now there is a float. You know this strip. No, when it is feeding, we are using feeders. They are called the strip feeders, or even strip can be fed by decoilers and coilers also. Decoilers or coilers से भी strip feed कर सकते हैं. Hmm. But then the strip has to stop exactly at a pitch. Like suppose pitch is nothing but the distance between these, two stations. Suppose here, suppose 25, the strip should stop exactly at a distance of 25 mm. But there will be some positioning inaccuracies. Hmm? Positioning inaccuracy. So that's why we use locator. So locator क्या करते हैं? Now with the help of a feeder, what will happen? Feeder will place this stripper exactly at 25, but that 25 will not be 0, 0. There will be some tolerances. Okay, maybe 20. It will feeder will position the strip at 24.9 to 25.1 plus minus 0.1. This locator क्या करेगा? ये जो 25 प्लस माइनस 0.1 के ऊपर जो स्ट्रिप आया उसको एग्जैक्टली लोकेट करेगा. मतलब दैट्स व्हाई दिस पेपर इज गिवन. तो इवन इफ इट इज थोड़ा 0.1 आगे या 0.1 पीछे रुक गया तो लोकेटर क्या है, ये डायमीटर कम है तो अंदर घुस जाएगा, और जब भी ये पूरा घुस जाता है तभी वो परफेक्टली 25 पे आ जाएगा. ओके, सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ लोकेशन इज. So you know now what is locator, what is punch, what is stripper, what is knockout. Knockout is used for ejecting the component. Pressure pad is used to give the pressure, and then stripper is used for holding the strip.
So I'll just give you overview also here. This is what you know a diet design done by the student. This is your progressive diet which we have to do. So these are the components. Now the most important here that you have to show the direction, because the person who is seeing this, he doesn't understand whether the strip is fed like this or strip is fed like this. Actually, the examiner can give 0 marks if the direction is not shown. But that, normally it is not done. Otherwise, because most of the students they forget to show the direction. So 10 mark की जगह straight away 0 is not good. But what is my appeal is that you have to show the you must show the direction how the strip is fed. Hmm? Which is the first operation, whether first station is this or first station is this, because here there are 3 4 stations. Hmm. And you have to also show, this is one mistake which is done in this, you have to also show what are the operations which are being done at each and every station. अभी यहाँ पे hmm, you see देखो यहाँ पे this is like here, now this is hatched here, okay, then यहाँ पे this is ऐसा दिख रहा है क्या हो रहा है चलने समझ में नहीं आ रहा है, okay? Because everywhere he has shown this shape, ये shape ऐसा इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है. So the basic, and you have to show the component, right? So यहाँ पे component कैसा है, ऐसे है. So instead of a round washer, जो outside round सा जो shape था, तो वो जो shape है उसकी जगह ऐसा shape है, उसके अंदर hole है. Hmm? तो इसमें कैसा हो रहा है, obviously it is feeding from this direction. Okay. So this is not a good design. So first you have to do the punching, then you have to uh, now ये this particular drawing में he has done a cropping first. This मतलब ये जो width रहता है ना वो exact size का नहीं रहता. We want a width पक्का width, like suppose mean plus minus 0.02. So this is what is called as a cropping. Cropping मतलब दोनों साइड से थोड़ा सा काट देते हैं और इसका width perfect कर देते हैं. Okay. Then it goes to the next station जहाँ पे वो punching करेगा ये hole. Then it goes to the next hole. वहाँ पे ये क्या करेगा, locate करेगा. This is the dowel. And then it goes to the next station where it does the this. तो जो जो ऑपरेशन हो रहा है उसको क्या करने का, कंटिन्यूस लाइन से दिखाने का. एंड द ऑपरेशंस other you can show by dotted. But here he should have shown only the strip being cropped. In here only the hole which is being punched, this did not be shown. Then third में we जो piloting कर रहे हैं, locating कर रहे हैं, and then fourth में this. Okay. अपना I was मीटिंग और नोट्स और देखता हूँ आपके वीडियोज है क्या. Let me see any more videos. This is the same sheet. थोड़ा zoomed है. So actually you cannot show like this. Whatever is being happening, that only you have to show. Okay, so I think the video which was shown, that is sufficient. So we can go for design of locating elements. Okay, design of locating element means what? How to locate your strip. आप strip को कैसे locate करेंगे? So this is what is the strip. And remember, strip को another word is stock. So many students they fail to answer this. Strip is also called as the stock. Yes.
this is your punch. Then you have a signature die. So this is your stop. अभी यहाँ पे क्या किया, punch hole is punch. Okay. Now when you are punching another hole, अभी strip ऐसा आगे जा रहा है from left to right. Always imagine. Okay. Left to right. So ये जो second hole which is being punched, it is being punched at some pitch. Maybe 50 mm or 60 mm. And then there is a distance, center distance between, like say 50 plus minus 0.02, I say 25 plus minus 0.05. Okay, so that means what, you have to take reference of this one hole. आपको ये फर्स्ट होल का रेफरेंस लेना है. Okay, and then you can do the second hole का punching. Okay, so for that, what you have to do, you have to take the reference of the previously punched hole. Okay. So now, can anybody tell me here in this case whether the strip is being fed from left to right, which I said, whether it is right or wrong, whether the strip is for this particular train, whether the strip is fed from left to right or whether the strip is fed from right to left. Right to left. Yeah. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Right to left. It is from. Come again. Right to left. Right to left. Right to left. So you have to, because many times I see, I make some false statements just to see whether you are paying attention or not. So now, Wasim, you tell me why from right to left. There is a written speed giving the right side. Sorry. So in diagram written is the In the speed is diagram. right. So, yeah. So this is essential. Suppose if this had not been there, okay, then how you will make it? How you will understand? See the locating button. See, this is what is your Yes, sir. The locating button. locating button is there. Correct ना? This locating button जब भी ऐसा स्ट्रिप आगे जाएगा ना, तो इसमें ऑलरेडी एक होल पंच हो गया है, बराबर है. सो व्हेन इट इज मूविंग, तो क्या करेगा, ये लोकेटिंग बटन है ना, इट इज ओनली स्लाइटली अप. रिमेंबर, ये हल्का सा, मतलब इट इज जस्ट अप बाय 0.2. तो पॉइंट, अगर ये सपोज ये लोकेटिंग बटन अगर सपोज इफ इट इज अप बाय से 2 mm, तो क्या होएगा, ये जो स्ट्रिप जो जा रहा है वो स्ट्रिप इधर ही अटक जाएगा. अंडरस्टैंड नो. बट सिंस इट इज जस्ट 0.1 और 0.2 अप, तो उससे क्या होता है, ये जो स्ट्रिप इसके ऊपर से जाता है, लेकिन ये जो होल किया है, पंच्ड होल है, उसमें वो अटक जाता है. अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टूड? सिंस दिस इज ओनली 0.2 अप, स्ट्रिप है वो पूरा इसको अटकता नहीं है, स्ट्रिप इसके ऊपर से आके जाता है, लेकिन वो होल में अटक जाता है. सो यहाँ पे क्या रहता है, दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन. स्ट्रिप अटक जाएगा या होल में अटक जाएगा, इट्स नॉट अ गुड डिजाइन. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऑलवेज गिव spring loaded buttons. Okay, spring loaded, but this is very low cost button stop, and we have to keep on observing whether this button, whether it is stopping the strip or not. Okay. So this is not a proper design, but just to make you aware that there is a button stop, to locate the strip. Then you have a latch stop. So latch stop is another device. Okay, यहाँ पे ये latch है, वो latch क्या करता है, strip को stop करते हैं. Okay, so that is another device, latch stop, to stop the strip. नीचे वाला पोर्शन है, that is called as the die, and ऊपर वाला पोर्शन is always a punch. If it is done from top to bottom, अगर उल्टा है तो नीचे वाला पंच हो जाता है, ऊपर वाला डाई हो जाता है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस 99% it is punch is at the top and die is at the bottom. Okay.
Then you have another stop that is called the finger stop. Finger stop में क्या होता है, ये this is the fulcrum, the pin here. तो यहाँ पे सपोज पंचिंग हो गया, सो पंचिंग होने के बाद क्या होता है, पियर्सिंग पंच ऊपर जाता है. तो जब भी पियर्सिंग पंच ऊपर जाता है, तभी क्या करता है, ये जो एडजस्टेबल या फिंगर कैम क्या करता है, इसको उठा देता है. ओके. और जो स्टॉप है उसको नीचे दबा देते हैं, सो दैट ये जो स्ट्रिप जो आगे आता है वो यहाँ पे अटक जाता है फिंगर स्टॉप में. So this is the kind of a automatic stop which gets activated when the punch moves up. इसका साइड व्यू दिखा है ऑटोमेटिक स्टॉप. हाउ डज इट वर्क्स? And this is a solid stop. So ये आपका पंच है. This is what is your solid stop is like this. तो यहाँ पे वो पॉजिटिवली स्ट्रिप है वो अटक जाएगा. देन यहाँ पे आदमी खड़ा रहेगा. ओके. तो ये पंचिंग होने के बाद आदमी क्या फंक्शन, व्हाट दैट पर्सन विल डू, ही विल लिफ्ट द स्ट्रिप, ही विल लिफ्ट द स्ट्रिप और खींचेगा उसको. ओके. एंड ही विल पुल द स्ट्रिप इन सच ए वे कि ये जो स्टॉप है, ये जो पंच किया होल है उसमें अटक जाएगा. So here, in case of solid stop, the person will be standing here. It cannot be unmanned. This is starting stop. ये भी spring loaded रहते हैं. Starting stop में कैसा रहता है, जब भी हम लोग फर्स्ट स्ट्रोक लेते हैं, पहला स्ट्रोक लेते हैं, whenever we are taking the first stroke, so that time आपका स्ट्रिप है वो लोकेट होना है. Strip has to be located. Okay. So in order to locate, you need to stop that strip. तो इसके लिए उसको रुकाने के लिए वी यूज दिस स्टार्टिंग स्ट्रोक. तो एक बार वो स्टार्टिंग स्ट्रोक यूज किया, एक स्ट्रोक हो गया, फिर बाद में वो ऑटोमेटिक फीडिंग होते रहेगा. तो उसको हम लोग क्या करते थे, डिसएंगेज करके रख देते स्टार्टिंग स्ट्रोक. वी कीप इट डिसएंगेज. Then these are the type of strippers. Strippers also can be used for holding the strips. So this is your fixed stripper. So where is the stripper? This is the stripper here. Okay. And you have this is your stock. यहाँ पर स्टॉक है. ठीक है. ये स्ट्रिपर है वो. now ये स्टॉक है. सपोज इफ द स्टॉक इज से 2 mm, मतलब ये 2 mm का पत्थर है. तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक जाने के लिए एक गाइड बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड द स्टॉक गाइड. सपोज इसका विड्थ 25 है, तो ये स्टॉक गाइड विल बी 25.1. तो इसमें से स्टॉक गाइड जाएगा. और इसका थिकनेस अगर 2 है, तो ये जो इसका थिकनेस रहेगा, स्टॉक गाइड का थिकनेस रहेगा 2.1. अब ये स्टॉक जब भी पंच ऊपर जाता है तो स्टॉक ऊपर आने का चांसेस रहता है. तो इसके लिए हम लोग इसके ऊपर स्ट्रिपर डाल देते हैं. तो वंस वी हैव अ स्ट्रिपर फ्रॉम द टॉप, देन ये खाली हल्का सा ही उठेगा जितना ये क्लियरेंस है. तो ये दिस इज 2 mm थिकनेस और ये स्ट्रिपर दिस इज 2.05. तो ये जो स्टॉक है खाली 0.05 उठेगा, विच इज ओके. स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर. स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर है, दैट इज it is moving up and down along with the punch. Strong guide, I just now I told you, that is ये जो स्टॉक जो जा रहा है वो ऐसा लेफ्ट राइट मूव नहीं होना होता है, लाइक अ स्नेक. It has to go straight. So that's why you have stock guide. And then these are the different type of the stock guides, which are self-explanatory. मतलब ये देखो यहाँ पे स्टॉक गाइड लगा है, यहाँ पे दिस इज ये स्टॉक. ये जस्ट ऐसा एक फ्लैट लगा के रख दिया इसमें. And pilots are for locating the previously punched holes in a strip. You have a spherical type and you have a flattened type. So always go for the spherical type. Then you have direct pilot and
इनडायरेक्ट पायलट. हाँ, सो डायरेक्ट पायलट ही ऐसा रहता है, प्रेस फिट या इट इज थ्रेडेड, थ्रेड मार के उसको फिट किया है. या हम लोग सॉकेट स्क्रू डाला है, या हेडेड पायलट. Then you have indirect pilot. ठीक है, so this I will again take if you want. So indirect pilots में again, but if you go through this, you will understand. I mean, no rocket science. This is headed. Then you have a quilled, that is B. In this diagram, this one is quilled. Then you have spring back. Because explain the different type of pilots, direct pilots or indirect pilots. This kind of questions are always asked. And then this is spring loaded quilled. So in case of, to summarize this, locating devices are basically pilots, then stock guide and stripper. These are the, so there are four devices, locating devices. I'll just ask, can anybody tell me what are the four locating devices? Wasim, bolo, and then we can conclude. है क्या Wasim there? Anybody? Ashish Panchal, bolo, what are the four devices, important devices which are used for locating? Huh? सुनाई नहीं दी. What are the locating devices? Mention the four locating devices. Buttons, pads, stoppers. Hmm. First is stop. बराबर है, solid stop. First is stop, button stop और solid stop, जो कि स्ट्रिप को रुकाता है. देन दूसरा पायलट, पायलट के लिए जो पंच होल करता है उसको लोकेट करना है. देन तीसरा स्टॉक गाइड. स्टॉक गाइड क्या करता है, स्ट्रिप को लेफ्ट राइट मूव होने को देगा नहीं, सीधा वो लाइक टनल कैसा रहता है उसमें से कैसा गाड़ी जाता है वैसा जाएगा. एंड देन फोर्थ इज स्ट्रिपर. स्ट्रिपर क्या करता है, हल्का सा दबा के रखता है सो दैट इट डजंट गेट, स्ट्रिप आपका ऊपर उठेगा नहीं. यू अंडरस्टूड? हेलो Yes. हेलो. हाँ, बोलो सोनिया इफ यू आर देयर. Yes, sir. हाँ बोलो ये चार डिवाइसेस वापस से. व्हाट आई टोल्ड, locating device. What, sir? Just explain me these four devices, locating devices, which I told just now. Hello, can you hear me properly? Hello, Ashish, you tell me again. Hello. Third stripper जो मतलब शीट को दबा के रखता है. Then pivot. Pivot नहीं, pilot. Pilot. हाँ, दो हो गया. Then तीसरा स्टॉक गाइड. तो stop and guide. हाँ. हाँ, स्टॉक गाइड. स्टॉक गाइड मतलब स्ट्रिप गाइड. स्टॉप का मतलब स्ट्रिप. एंड देन एक है वो स्टॉप, बटन स्टॉप या सॉलिड स्टॉप. ठीक है, Uh, क्या हो गया सोनिया? striper and pilot. हाँ, वापस से बोलो. व्हाट इज हैपनिंग विथ योर डिवाइस? बोलो सोनिया. I think, sir, here it is much noise. That's why. हाँ बोलो. सांग परत एकदा सोनिया. Yes, sir. The striper, pilot, and stock guide. स्ट्राइपर नहीं बोलने का, स्ट्रिपर. Okay, stripper. Yes, stripper. स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिपर. Stripper. Stripper is for holding the stock. Then Yes. then pilot. Yes. Pilot. And then stock guide. Stock guide is like a tunnel. गाड़ी जाता है वैसा स्ट्रिप जाएगा. And then stop, button stop. You're locating stop. जो Yes. physically strip को stop करते हैं. ठीक है, we'll see tomorrow. We'll continue. Thank you so much. Okay, sir. कोई डाउट है तो पूछिए.
हेलो सर। या सर हाँ बोलो। डाउट नहीं है, लेकिन वो हाँ सबमिशन के बारे में बोलना था। हाँ बोलो। सर जो शीट इसका ड्रिल जी का जो सबमिट करना है, हम्म। वो मेरे ग्रुप का रह गया है क्योंकि मेरा ऑटोकैड का प्रॉब्लम हुआ है, तो मैंने शीट पे ड्रॉप किया है। तो हाँ चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, मैंने बोला था ना चलेगा, लेकिन यू शुड हैव ऑल, मतलब वो कंपोनेंट ड्राइंग होना है, वो तो रहेगा। हाँ बाद में उसका 3D मॉडल आपको ड्रॉ करके भेजना है कंपोनेंट ड्राइंग का, बाद में जिग का 3D मॉडल मैन्युअली ड्रॉ करने का, और फिर जिग का रूल ऑर्थोग्राफिक व्यू। सर, और उसमें मैंने ना चेन दिया है उसको, ड्रिल जिग के लिए। क्या दिया है? चेन दिया है उसमें, चेन चेन। तो चेन, हाँ, हाँ, तो पकड़ के रखने के लिए। हाँ, तो वो भी कंपोनेंट लिस्ट लिस्ट में डालना है क्या? बिल ऑफ मटेरियल में, सॉरी। हाँ, चेन भी डालना पड़ेगा ना, जो भी आप यूज करते हो तो वहाँ पे आप चेन रखो, उसका क्या साइज है, इसका कितना लेंथ रहेगा अप्रोक्सीमेटली, और उसका मटेरियल स्टैंडर्ड करके लिखने का। आपका ऑर्डर तो ओके। करना पड़ेगा ना चेन की हाँ, बनाने के टाइम, 1 मीटर लंबा चाहिए, 2 मीटर लंबा चाहिए, कितना चाहिए। चलेगा। ओके। ठीक है सर। सर तो मुझे 2 दिन दे दो, थोड़ा ऑटोकैड का मेरा स्टूडेंट वर्जन खत्म हो गया है, तो मैं दूसरा बना के दे देता हूँ आपको। ठीक है। ठीक। ओके। ओके, थैंक यू। सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ। सर वो आपने जो बोला था ना, ये मिलिंग मिलिंग का बनाना है, बिलिंग पिक्चर, हाँ। मिलिंग पिक्चर जो बनाना है मेरे को, वो सिर्फ 8 रेडियस का मिलिंग पिक्चर बनाना है, या फिर वो बीच में एक जो बड़ा स्लॉट जो गया है उसका भी बनाना देखो, है? एक ही पिक्चर बनाना, विचेवर एक यू, ही। हाँ, विचेवर इज इजियर फॉर यू। प्लॉट के लिए ओके। बोला था। हाँ, आपने 8 रेडियस स्लॉट के लिए बोला था आपने। और मैंने वो ठीक है। तुमको भेजने को बोला था, तो वो भेजा नहीं। हाँ हाँ सर, मैं हफ्ते भर से बीमार था सर, वायरल इन्फेक्शन हुआ था, मैंने सबमिशन भी सैटरडे को बना के किया। ओके, ठीक है। ओके। हाँ, वायरल इन्फेक्शन हो गया था मेरे को लास्ट वीक से। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच।